आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं Django React फुल स्टैक ट्यूटोरियल का इंटीग्रेटिंग रिएक्ट जेएस। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे नॉर्मली। तो सबसे पहले हम लोग अपना इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो कोंडा एक्टिवेट फोलियो एनवी जैसे एक्टिवेट हो गया है, इसमें मेरे प्री इंस्टॉल सारे टूल्स ऑन लाइब्रेरीज हैं और आपका नोड भी है और सिंपली रिएक्ट का भी इंस्टॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या हो गया पावर, सॉरी इसमें क्या है कि पावर सेल ओपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग अपने सीएमडी को ओपन करेंगे। सीएमडी को ओपन करेंगे, उसमें आप बेसिकली ये सारे रन कर सकते हैं। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट को रन कर सकते हैं। लिखेंगे और सिंपली एंटर, तो ये आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा तो आप क्या करोगे, cd अपने प्रोजेक्ट फाइल में जाएगा, पोर्टफोलियो कॉपी। मैंने और ये मैंने 3-4 कॉपी इतने सारे देख रहे हो, ये मैंने अपने डेमो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया हुआ है और इसमें से एक क्या है जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डी आई आर आपको दिखा देते हैं, इसके डायरेक्टरीज को दिखा देते हैं। एपीआई है, पोर्टफोलियो है एंड मैनेज डॉट पी वाई। तो हम लोग एक एप्लीकेशन, आपके पास ऐप है एपीआई इवेंट का एंड दूसरा बनेगा आपका यहाँ पे फ्रंट एंड का। तो क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्रिएट कर लेंगे अपने, हम लोग इतना करेंगे Django admin start app, नेम देंगे फ्रंट एंड और सिंपली क्लिक करेंगे एंटर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा और वो एप्लीकेशन आ जाएगा फ्रंट एंड के नेम से। आपका सब देख चुके हैं, आपका फ्रंट एंड का एप्लीकेशन बन के तैयार है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3 फोल्डर बनाएंगे सिंपली, जिसका नाम होगा रहेगा स्टैटिक फाइल्स, जिसमें हम लोग अपने स्टैटिक फाइल्स जावास्क्रिप्ट सीएसएस और इमेजेस को रखेंगे। दूसरा रहेगा रिसोर्स फाइल, जिसमें अपने रिएक्ट के फाइल्स को रखेंगे। तीसरा रहेगा टेम्पलेट फाइल्स, इसमें हम लोग अपने एचटीएमएल फाइल्स को रखेंगे। सिंपली हम लोग ये फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। 3 फोल्डर्स बनाए, पहले एसआरसी स्टैटिक्स एंड टेम्पलेट्स, एंड स्टैटिक के अंदर हम लोग बनाएंगे फोल्डर्स जिसमें रहेगा सीएसएस, एक और फोल्डर रहेगा इसी में इमेज हम लोग सिंपली इमेज बना रहे हैं, और एक और रहेगा आपका एक मैंने स्टैटिक के अंदर बनाया सी एस एस फ्रंट एंड इमेज। फ्रंट एंड के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, सिंपली इसके जो भी इंडेक्स डॉट सी एस जेएस रहेंगे वो फाइल्स इसमें रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका क्या है, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है फ्रंट एंड कॉन्फ़िग। तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट फ्रंट एंड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज अपने सेटिंग्स डॉट पी वाई में उसको बताएंगे कि हमारा एक एप्लीकेशन है पोर्टफोलियो, ये प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, इसमें सेटिंग्स डॉट पी वाई है। इसके अंदर हम लोग अपने ऐप को कॉन्फ़िग करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना ऐप को कॉन्फ़िग करते हैं, नाम रखते हैं फ्रंट एंड, और ये हमारा क्या था, ऐप्स था डॉट एप्स डॉट, वहाँ पे क्या था हमारा क्लास का नेम फ्रंट एंड कॉन्फ़िग। आप सिंपली नाम दे सकते हो या फिर आपका जो ऐप का नेम है वो उससे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
दोनों में से आप किसी भी तरह से कर सकते हो। फ्रंटेंड कॉन्फ़िग, ये आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन था और ये आपका एप्लीकेशन का नाम, और ये क्या था, ऐप था। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ऐप को थोड़ा सा इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसके अंदर जाना होगा cd फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे। इससे जाएंगे हम लोग npm init all yes, इससे क्या होगा, हमारा npm इनिशियलाइज हो जाएगा। इसे इनिट करेंगे तो हम लोग बेसिक जो भी पैकेजेस हैं उसको फिर इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपका रिएक्ट है, बेबल मटेरियल यूआई है, वेब पैक है, जो बंडल बनाने में काम देता है, जैसे आप सर्वर रन करते हो तो, और उनके कॉन्फ़िगरेशन पेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली मैं एक एक करके करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे दिखाते जाऊँगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि माई सिस्टम इज़ वेरी स्लो और साथ में कोडिंग करूँगा तो स्लो हो जा रहा। तो बेसिकली मैं पहले कोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने npm से इनिट किया, हमारा एक पैकेज नेम का फोल्डर बना। कहाँ पे बना, ये फ्रंट एंड के अंदर बना। तो ये आपने देख रहे हो, ये पैकेज डॉट जेसन, इसके अंदर क्या है कि आपका कौन सा फाइल से, कौन सा नोड जैसे इंडेक्स जो है, इंडेक्स डॉट जेस वो स्टार्टिंग फाइल से है, और इको टेस्ट ये लाइसेंस और ये सब। तो ये सब हो गया। उसका हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, npm वेब इंस्टॉल कर रहे हैं। जो हम क्या करेगा, हमें अपने जितने भी नो रिएक्ट जेएस के फाइल्स हैं और सबको एक ही बंडल बना के उसको रन करने में काम किया, एक पैकेट बना के। एंड देन दूसरा रहेगा आपका बेबल, जो क्या करेगा, npm को रन करने में और रिएक्ट को रन करने में हेल्प करता है। देन दूसरा इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग बेबल कोड लोडर, हमारे फाइल्स को लोड करेगा। So we basically installed our Babel. The third one is we install so basically I installed present env, and present env also we use save the react present. These are tools for creating a these tools creating a web bundle which is useful for run the backends, run the front end with the backend of Python. So we install these files. Again install the React DOM. We install the React DOM. Then we install UI materials for the React development. And after that we install the Babel plugin proposal class properties, which is used to use the Babel all the React route DOM manipulations to define our route. And the last one, in last but not the least, we install npm material UI, and we can also choose the flavor of React, which is maybe a wheat. I will use further, but before I install this package and run our backend and frontend both same time, so it is work or not. After that we decide which React flavor we use to create our site. Now I install the UI material. So press the wrong, so we just a question marks.
So we install the npm install material UI icons. So now what we have to do now, we now create a file. The name of the file is babel.config.json, and we paste some code which is predefined, where I will give you the link of the file. You can just copy and paste in your file, which I do. Same you can do. So go to the front end, file, folder, click on file, write babel.config.json, enter, and when you enter this, you simply copy one file which I give you in comment or in the GitHub. You control copy and paste, control V. This is the file which I copy, and the second file we create, that is webpack.config.js. Sometimes it JS or sometimes it's JSX, which is a file extension name. So we front end, then file, then file name webpack.config.js, enter. When we enter, we copy the file which I give you in and paste in this file. Simply copy and paste. Control C. Okay, 1 minute. That we have a one changes in the package.json, which is in the script. You can just copy 2 lines, dev and build webpack. So where is my package.json? In this file we have some file path, that is a script in JSON form. So in this, that is, you can paste your code here. Inside this you can just copy and paste your code. That is development webpack we use and builder webpack we use, and control S. Now our file is ready to run or build a builder on the server. So now we create a normal index.js. To do now, we don't directly create our template in the Django file. So what we have to do, we create a file in the src. Inside the src we create a index.js where we call our HTML file, and after that we create an index.js, and in our template folder we create one more folder, the same name of the file, this front-end application, uh, front end, and inside the front end we create our index dot html to write our HTML files.
So inside the index.html we paste our code, that is our first line, HTML document and viewport, that is load a static files that is we use in the static folder, that is a CSS, JavaScript or maybe images we use. And these are some Ajax library jQuery which is used for front-end design purpose. We also use our index.css from the CSS file folder, and this is a style sheets. And we use also, there is main topic, that is to div, that is main or app. There we show our application details and all the design of the React in this div containers, and use for front main.js to activate our React. So after that, what we have to do now, we create our src, that is implemented. And after that we have my views of frontend. In frontend views we create a normal index page, the index, and we pass the request parameter to request from the server, and we return with the render of HTML file which is saving frontend slash index.html. This is our view. But before view we have one more thing, that is we create a URL of this application. So new file, then urls.py, where we create the URL of this application. URL patterns, we define the path, and we simply define, and then we use our views, that is called index. Now our route is created, and we name some name, that is called front. We define our route path. We configure our URL of front end application in main project application, just like that. Path, nothing, we use something here, but I will use include front end dot urls. एक minute. So we had the front end dot urls. Now complete our path. Now we go to the for control s, control s. Then now we go for our front end app.js or main.js. Now we go to the src folder. Where is my src? That is my src folder. Src, create new file that is app.js, and we import the React component from the React, and then import the render from the React DOM. After that we export our default class app from the component, and we create the constructor of the prompts, and we also use same super class prompts.
and after that we render some application or names, that is I will give in simple paragraph, and after that we create a constant app div which is document.get element by the id from the our app, and we render the app with app div. So basically we'll see that code here. This is our full code. So first of all react import and then render, and this. Then after that what we have to do, in the index.js we import app from the dot slash app. Index.js, in the same file import app from double colon dot slash app. So this is तो इतना देर तक हम लोगों ने क्या किया, basically we integrate our front end and back end with the use of Babel and Webpack for responsible of the compiling our JavaScript files. So they make sure that we browser is able to read and show our code, and after that we have include the urls.py, and we create a views.py simple HTML index page, and after that we create a attach the simple application urls to the our main project url, and we index.html we create a main.js. So I hope this all clear. So now what we have to do now, we have run our terminal npm run div. I hope this run without any error, and in second terminal file we run our python backend server, then conda activate portfolio env, and we go to the project file, that is portfolio copy cd portfolio copy. At the portfolio copy we have python manage dot py run server. This also run fine, but there is some error. Where is my error? Okay, so my environment is not activate, so python activate portfolio env. So I hope this time it activate. Yes, activate, and then we run python manage.py run server, and we now go to the node. Then what is the error is showing me?